The chapter's name earlier was freedom. Maybe in your syllabus or somewhere it might be given as freedom, but now CBSE has changed its name into liberty. And you also have some portion in your reference material which has been added, which I have added in my notes itself. मैंने अपने notes में ही add कर दिया है, not to बच्चों को मतलब confusion नहीं होना चाहिए, right? So when we before we start, let us talk ki what is freedom or liberty. मतलब freedom और liberty की दो अलग meanings है, which is specifically given in your CBSE's reference material. You must have studied, हम लोगों ने 10th standard में, yes, we had the chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. If you remember, the second chapter, and that talked about what freedom was for him, for people like Nelson Mandela, because they could not do what they wanted to do, जो वो करना चाहते थे, whether they wanted to study, whether they wanted to marry, whether they want to live a comfortable life, a normal life, they were not allowed. उनके लिए freedom was to come out. अगर हम 12th standard में in English you have one chapter Indigo based on Champaran episode. In that if you read, आपको समझ आएगा that Gandhi ji's principle or philosophy was freedom from fear. जब तक हम डरते रहेंगे, we would never be able to do anything. Same was Aung San Suu Kyi. मतलब हम इसको स्पेल सुशी करते हैं बेटा, KYI है लेकिन हम इसको सुशी कहते हैं. And this is a book which she has written. The reason is she was also separated from her husband. She was in actually exile. उनको house arrest में डाला हुआ था. And the reason was she was the one who had initiated, advocated democracy in वहां पर जो है म्यांमार में. She was the one. तो even though her party had won, लेकिन उसको जो opposition है, they were not allowing her to form the government. She was put into the house arrest. In fact, she has been conferred with Nobel Prize. So there have been several people who have given different meanings for liberty or freedom. हम अपने जनरल लाइफ में फ्रीडम को क्या कहते हैं? What do you understand by freedom for you? Maybe, मतलब as a girl, I'll talk about myself. For me, मतलब till I was, मतलब कि मैं खुद अपने पैरों पे जब खड़ी हुई, that was after my marriage in fact. मुझे लगता था कि I never had any freedom. मतलब मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या पहन सकती हूँ, मैं क्या पढ़ सकती हूँ. तो freedom might be different for different people, but when it वो दूसरों को सप्रेस करना शुरू कर दे, वो दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर दे, then we need to oppose. Now there are certain freedom which मतलब कि कुछ लिबर्टी हमारी ऐसी है जो हमें चाहिए और कुछ लिबर्टी ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए. Like if I say I want, मतलब कि मुझे freedom चाहिए what I should wear and what I should eat, that is मतलब कि right. लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज कहूं which is not acceptable by society, for my age, for my what you say मेरा जो profession है, then that will be a negative. And sometimes ये एक मतलब कि controversy है, but this is one of the very important question from this chapter. और वो है कि हम कहते हैं, हम लोगों ने वो लर्न किया था कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में, तो आई टोल्ड यू दैट वी हैव सर्टेन राइट्स, एंड हमने जो राइट्स वाला चैप्टर भी किया था, एंड इन द चैप्टर वी रेड दैट राइट टू स्पीच इज आवर फंडामेंटल राइट, बट माय राइट should not harm anyone. My freedom doesn't mean I need to harm anyone, I need to hurt anyone. So in this chapter, because it's a मतलब कि आपका supplementary book है, तो we are going to read about all those ideas, philosophies that we have
learnt in constitution. As I said, I started with the same, that there is in your book, the photo is also given for Dr. Nelson Mandela, the first South African black president, जो आपका पूरा चैप्टर एंड 10th स्टैंडर्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके अंदर ही हैज रिटन अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल, द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थीड regime, about how the blacks and whites were segregated, and not only segregated. I have, some of the people who are known to me, they tell कि वहां पर द ब्लैक्स अगर उनको व्हाइट्स के एरिया से गुजरना भी पड़ता था ना, तो दे नीडेड टू crawl like insects. So that was the brutality they had suffered. Whereas Aung San Suu Kyi जो है, she tells about कि if she sometimes moves away from her country, she will not be allowed to. यानी कि उसको अपने ही कंट्री में एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जो है उसको रहने के लिए she was suffering. For me, what she says is real freedom is freedom from fear. And if you are not able to, you cannot live a dignified human life. And this is what even Gandhi ji had propagated in the Champaran episode. What he said is that people should be free from fear. They should be able to speak up. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, what is freedom? तो when there are some constraints, यानी कि कुछ restrictions, when external constraints on the individual are absent, and when people can develop their creativity and capability to their fullest potential. Like आपको स्कूल के अंदर freedom दिया गया है, आप चार्ट बनाओ, you prepare a dance, you choreograph a dance, but the teacher will not be interfering. यानी कि there is no restriction, यानी कि there is freedom. That means आप उसके अंदर जो भी मूव डालना चाहते हो, nobody is going to say कि why this move has been put. That is freedom. तो क्या freedom is always good? So there are certain positive and certain negative. Negative dimension when external constraints on the individual are absent. As I said, बिल्कुल छोड़ दिया, that is wrong. Morally, there is certain, हाँ, अब स्कूल का डांस फंक्शन है, वहां पे पॉजिटिव डायमेंशन, वहां पे इट्स ओके. बट सर्टन टाइम्स इफ वी लीव पीपल लाइक इन अ कंट्री, अगर हम लोगों को कहते हैं ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, आपको जो बोलना बोलो, what will happen? It would result in conflicts, it will result in riots, it will result in violence. So negative dimension is when there is no restriction. लेकिन पॉजिटिव डायमेंशन है जहां आपको एक ऐसा कंडीशन दिया जहां आप अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हो. जैसे बच्चा, जब आप लोग ऑफिस में काम करते हो, तो देर आर सर्टेन एरियाज जहां आपका बॉस आपके सर पे आके बैठेगा, बट एट सर्टेन एरियाज ही वुड से कि दे टेक द कॉल योरसेल्फ. तो ये जो वर्ड है ना, टेक द कॉल योरसेल्फ, दैट इज फ्रीडम. एंड दैट इज अ पॉजिटिव फ्रीडम, क्योंकि उसमें आप अपने दिमाग को लगा रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को लगा रहे हो. आप पे सर पे आकर कोई हमेशा बैठा रहेगा, ओके व्हाट यू हैव डन, शो मी द सेकंड स्टेप, शो मी द थर्ड स्टेप, यू वुड बिकम इरिटेटेड. बट इफ यू आर गिवन दैट एरिया, पेस, जिसको हम बोलते हैं पेस, कि ओके डू इट एंड देन इतने टाइम के बाद आप मुझे दिखाना, that is where you are developing. आपको भी पता क्या होगा, oh my god, I have to, my boss has trusted me, my teacher has trusted me, I need to give the best.
Now the question comes, should there be restrictions on freedom? जब हम freedom बोल रहे हैं तो क्या restrictions होने चाहिए? बिल्कुल. As अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है, negative and positive dimension. If there is no constraint, if there is no restrictions, then definitely the world will become another chaos. Because in the name of freedom, we would start manipulating each other. No individual, हमारे घरों के अंदर भी है. You have, when you go for a function, I know मतलब कि pretty well, we all are Indians. So what do? अगर हमें traditional function में जाना होता तो we are bit traditional. When we want to go with the for the party or movie, तो हमारा जो मतलब कि outlook है वो change होता है. What is this? ये है क्या चीज? यही तो constraint है. अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा तो व्हाट विल हैपन? नाउडेज देयर आर सो मेनी केसेस इन फैक्ट जहां मैंने देखा है कि फ्रीडम के नाम पर पीपल आर एक्टिंग व्हाट यू से क्रेजी. दैट इज वेयर फ्रीडम हैज टू बी देयर. लाइक एग्जांपल, हमारा जो अभी पहले क्या था बच्चा, हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, दूरदर्शन एयर मतलब कि AIR, दैट वाज कंप्लीटली सेंसर्ड. that was completely under government. तो कैसा एड आना चाहिए, कैसे गाने आने चाहिए, कैसा आपका मतलब कि किस तरीके की मूवी को हमें देना चाहिए, there were so many constraints. But now due to privatization where the government cannot enter, you see what happens. People are now asking, भाई नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे थोड़ा सा मतलब कि कुछ ना कुछ तो डालो, इतना मतलब कि देखने लायक नहीं रहता है. All the time there is only one thing, that is violence. Now people are asking, यानी कि no individual living in society can hope to enjoy the total absence of any kind of constraint or restrictions. We cannot live in a world where there are no constraints. Why? Some constraints are required to regulate the society. I have already given a number of examples in a decent manner. And as no constraint would lead society to descend into chaos. So long we are able to respect each other's views, do not attempt to impose our views on others, we may live freely. With minimum, we need some legal and political restraint to ensure that differences may be discussed, debated within one group, coercively imposing its views on the other. जैसे हमारे कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि एनी बिल व्हिच व्हेन इट इज प्रेजेंटेड देयर इज अ डिबेट. बिकॉज अगर किसी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट वुड व्हाट वुड बिकम, वो इम्पोजिंग होगा, वो आपका डिक्टेटरशिप होगा, एंड विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय पीपल. यानी कि व्हेन वी आर इवन इम्प्लीमेंटिंग अ सिंपल लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयर आल्सो वी हैव अ डिस्कशन. क्योंकि मे बी व्हाट वी सेड इज, और इसीलिए हमें लीगल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट चाहिए ताकि हम एक दूसरे पर अपनी बात को जोर जबरदस्ती से ना मनाएं. Next is, could there be a free society without any constraints? Already I have discussed, no. It is not possible. In a free society, we should be able to hold our views, develop our own rules of living and pursue our choice. But such society also requires some constraint. जैसे I said कि when you are living in a family, even in a family of say 4 people, ऐसा तो नहीं होगा कि चारों की जो सोच है वो एक ही जैसी होगी. It's not possible. Right. So when we are living even in a family, there are certain constraints that we have. And we are given this कि हम एक दूसरे को जो है respect करें. The difference of opinions that we might be having. See, when you are married, when you go to a family, वहां पर क्या होता है, your mother-in-law might not be like you.
your father-in-law might not be like you, your sister-in-law might not be like you, then what will happen? Nothing. If you respect each other, अगर हम ये बोले freedom के नाम पर we start fighting, no, this is wrong, this is right, we would never be able to. But if there are certain, अब वो क्या है, वो constraint क्या है? How to talk to your parents, how to behave when you are standing in front of your elders. These are constraints. और वो कंस्ट्रेंट्स हमें एक परफेक्ट इंसान बनाता है. वो वही एक चीज है जो हमें परफेक्ट बनाता है. एंड व्हेन वी लूज दैट मॉरल वैल्यू वी बिकम इम्परफेक्ट. व्हेन वी स्टार्ट शाउटिंग एंड इन अ सोसाइटी, इन अ कंट्री, मतलब एक इंडिविजुअल के घर से बच्चा सोसाइटी आती है, सोसाइटी से आपका नेशन आता है. Why wars take place? Why wars take place? Because we are not able to respect our differences. We want to impose our view on others. So now, what are those sources? कौन से sources हैं? In our home, it is moral sources. In the society, it is the social sources. In the country, it is the legal and political sources. घर के अंदर हमारी अपनी एक दायरा हम बोलते हैं ना, some dimension we have certain, वो है. Whereas in a society there are certain social norms. In a country there might be some law which might be imposed by the government that embody the powers of the rulers over the people and which may have the backing of force. Now, if someone is, जब हम मतलब कि बोलते हैं, we have the freedom of speech, right? There was one controversy, in fact, मतलब बहुत बड़ा controversy हुआ था. That was, in the newspaper for many days. जब ये controversy हुआ था, तो the question was, the person who spoke wrong, he said, I have freedom of speech. Right? Now the government, जो मतलब जिस पर बोला गया था, that person took the issue into the court, and then it was told कि भाई, freedom of speech doesn't mean that you are opposing someone in a harmful manner, and that is where the protection was given. So the government enacts certain laws, certain rules, so that people are not manipulating or overusing their freedom. So now when we talk about governments, we have already studied what are non-government, non-democracy. And we also know that ये जो non-democratic government होता है, that government doesn't have any kind of rules and regulations. They might not be giving the right freedom to their citizens, because वहां पर हम word citizen तो use ही नहीं करते हैं, we use a word subjects. Whereas in a democracy, either when you say that we are given certain rights which are also accompanied with some responsibilities, the government tries to protect us. In a democratic government, the members of a state could retain some control over. और हमारे लिए, for जो मैंने बोला कि भाई अगर एक रूलर जो है वो गलत काम करता है, in a non-democratic government you don't have any power, but in a democratic government you have the power. You have certain legal powers with you. आपके पास PIL है, आपके पास
फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहता है कि उसका नाम क्या, सीकिंग द मेजर्स, वो है आपके पास। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू कैन प्रोटेस्ट, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, you have certain freedom with you. But in non-democracy, whatever is happening, if the ruler is good, he considers the subjects as citizens, then everything is good. जैसे पहले जमाने में कहते थे राम राज्य. But if the ruler is not good, या फिर he is completely dictatorship, as it is said in the case of Hitler, then the people will not be living peaceful life. So that is why when it comes to the word freedom, it is democracy where it is good. Now, why it is valuable? That is because it helps us to make choices. It helps us to exercise our judgment. As I said, ये आपके बुक में एक छोटा सा ये बना भी हुआ है, दिस येलो कलर इज मेड। गांधी जी का मानना था स्वराज एंड फ्रीडम इज सेम, बट इट इज नॉट, मीनिंग सेम नहीं है, बट इट इज सिनोनिमस। उनका मानना था स्वराज मीन्स स्वराज, अपने पे हमें राज करना, यानी कि रूल द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। भाई अपने आप को भी रेगुलेट करो और अपने आप को चलाओ। यू शुड नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मीन्स वी मस्ट बी रूल्ड बाय आवर ओन पीपल एंड एवरी person must live with respect and dignity. There should be no fear. There should be no poverty or unemployment. And there should be minimum standard of living. No one should be forced to work, but there should be responsibility, rule over self, अपने ऊपर। अब कोई कहता नहीं है आपको डंडा मार के कि आप काम करो, लेकिन अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो आपको खुद को लगेगा कि why I am sitting idle, why should not I work? That is आपका सेल्फ रूल, आप खुद को रूल कर रहे हो। There is one thing, भाई जाओ नौकरी करो, employment, don't sit, and दूसरा है why should I sit idle? That is, for him that was freedom. When you are able to take independent decisions, when you are able to rule over yourself, उनका मानना था ये। एंड ये वाला जो है बेटा पेपर में आता है महात्मा गांधी लुकआउट एट फ्रीडम, एंड एक आता है जेएस मिल। जेएस मिल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर हिम देयर वर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट he said is economic freedom. Second he said is social freedom, and third he said is cultural freedom. Economic freedom मतलब money wise poverty should be eliminated, there should be more creation of employment. Social, where there is no discrimination, he was against the principle of untouchability. And cultural, where we respect all the religions and culture. So ये तीनों जो हैं, they were the views of Mahatma Gandhi on freedom, and this comes as a 2-marker question. What are the 3 types? Now ये आपका जो है, this is one of the most important. बहुत अगर आप पेपर निकालोगे, you will definitely find a question on this. J.S. Mill's harm principle. मतलब what he wants to say is what constraints are justifiable. मतलब कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम justify कर सकते हैं. According to him, he says the sole end of mankind are warranted individually or collectively in interfering with liberty of action. Any of their number is self-protection. That only purpose for which
power is rightly exercised over any member of civilized community against his will is to prevent harm to others. उनका मानना है कि कई बार मतलब कि हम जो हैं मतलब the sole end for which mankind are warranted मतलब उन्हें किसी चीज को करने के लिए अगर मना किया जाता है लेकिन अगर उस पावर को सही तरीके से यूज किया है over the civilized community even if it is not in his will उसको पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी यूज किया है तो दैट इज ओनली बिकॉज वी मस्ट नॉट हार्म अदर्स what he mean to say by harm principle is those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else. Here actor means the one who takes the action and दूसरों के लिए other regarding actions is those actions that also have consequences for others. If your actions cause any else harm then they must be safe from such harm by some external authority. Kindly always remove this but so remember this particular concept from liberty is very important. My harm principle का मतलब as I have already discussed मतलब you must not commit any action which causes harm to others. और अगर ऐसा है तो there should be some external authority which is able to protect. जैसे मैंने आपको डेमोक्रेसी में बताया कि हमारे पास we have the rights जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कि एक एक्सटर्नल अथॉरिटी ने दिया हुआ है that protect us. In a case हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं in a case if a person is arrested he or she has the मतलब कि उसको बिना बोले उसको अरेस्ट किया है then the person has the right to मतलब कि go to the court and उसके लिए उन्होंने क्या दे रखा है that if a person is arrested he or she must be presented before the magistrate within 24 hours. तो ये जो constraint डाला है ना this is because they don't want to adopt harm principle. यानी कि if your action causes harm to anyone else there should be someone who is able to protect that person. Self regarding मतलब आपका एक्शन जो आपके लिए ही नुकसान है but if it is to somebody else then there should be some authority also. In this case it is the state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else. Already given you the example of democratic government where you have the rights यानी कि गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ ऐसे राइट्स देता है जो दूसरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता. So that is J.S. Mill's harm principle. And if this particular question comes in your exam, you need to write these 2 points. Not the definition, but you need to write the 2 points. Unless and until in your school, if it is written, what is, define what is J.S. Mill's harm principle, you don't need to, but unka jo hai, ki there are some actions which might be harmful to yourself, and there might be some actions which might be harmful to others. And when it is harmful to others, at that time, there should be some constraint that restricts harm to others. Right? अब हमारा आता है when should freedom be restricted? In we had कल हम लोग पढ़ रहे थे in the last हम लोग पढ़ रहे थे तो we had one thing कि president जो है he is having the power to impose emergency when there is मतलब की threat to the law and order of the country. राइट तो ये जो जब ये लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट है तब यानी कि हमने जो लोग थे सिविल्स थे उनके फ्रीडम को हमने करटेल किया. क्यों किया? क्योंकि हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में
Due to certain circumstances, there might be a conflict, violence or riot. और इसीलिए उसे प्रिवेंशन करने के लिए हमने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की है. Because we have seen that there is disturbance in the law and order of the country and maybe it worsens. इसीलिए उस फ्रीडम को हमने curtail कर दिया. यानी when should freedom be restricted? Not in all the circumstances. Only in exceptional circumstances should it be restricted. The damage must be severe. जैसे mill prefers social disapproval to legal punishment for minor infractions. They should not contact the authorities. छोटी छोटी चीजों के लिए authorities की जरूरत नहीं है. To show their disapproval, they should refuse to greet the people. You know, in ये क्या नाम है? In Japan, what happens is, if मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या होता है? When there is a मतलब कि disagreement between the management and the workers, तो हमारे यहाँ पर एक बहुत गलत चीज ये होती है बच्चा कि people normally would be taking the law in their hands. They would be raising the slogans. They would be protesting. They would be sitting on strike. काम को बंद कर देंगे. But in Japan, what they do is when such disagreement मतलब कि होता है, if such disagreement occurs, the workers would put a black batch on their मतलब कि they would be putting a black batch and they would not speak. काम पूरा होगा लेकिन they would be showing their disapproval. So according to Mill, what he says is अगर छोटा मोटा कोई मतलब कि सोशल डिसऑर्डर है तो जस्ट आप उस इंसान से अपनी नाराजगी जाहिर करो. As I was telling you that sometimes मतलब कि when there is an मतलब जापान के अंदर क्या होता है in their working culture. In our country, most of the time it happens that the people go on strike. They would be raising unnecessary slogans and they might stop working. But in Japan, what happens is when there is disagreement between the management and the workers, they would definitely work. They would be putting a black batch and they would show their disapproval. They would not speak to each other or to the management, but they would continue the work. Work would not get affected. यानी कि मिल का मानना है कि if there is certain social disapproval and for minor infractions, it should not be very major, then you should sort out there only. लेकिन अगर there is a damage that can cause severe, then definitely we need to have the restrictions. We need to have some authority. Different lifestyles, viewpoints, interests should be tolerated as long do not harm others. As I said, कि भाई आपको बिल्कुल है, you can tell me, ma'am, this is there. मतलब कि when we are definitely even in a family of 4 also, मतलब जहां 2 बच्चे और है या एक बच्चा भी होता है ना, वहां पर this is very natural that we are not going to have the same difference, the same opinions. For example, my food जो है ना, that मतलब कि 90% it is like my younger daughter, and of course हम तीनों का एक जैसा है. My husband is bit different. My husband is completely different. मतलब वो मिर्ची वजह नहीं खाते हैं, मतलब और हम तीनों जो है ना वो मसालों को पीस के भी खा लेते हैं. So we are very fond. But at the same time, if you look into my elder daughter, she is completely the copycat of my husband. मतलब वो बिल्कुल वैसी ही है, very balanced, very intelligent, बहुत intelligent. She is extremely intelligent, just like her father. She knows how. मतलब कि वो तो कैसे भी मर्जी ड्राइव कर लेगी, कहीं पर भी चली जाएगी. She is very मतलब कि bold. छोटी वाली जो है वो जिसको कहते हैं ना एकेडमिक्स में वो 100 से कभी नीचे नहीं होते. Though she is now postgraduate in doctor, but still she is very subtle.
शी इज वेरी सटल. तो हम तीन है. अब होता क्या है कि सर्टेन मूवीज होती है तो शी बोल, बड़ी वाली कहेगी मामा चलो, यू कम. मेरा चलता है, मेरे को तो छोटी वाली की मामा दिस विल बी शी नोज दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थीम्स ऑफ द मूवी. चलो लेट अस गो फॉर दैट. हम चारों का हर जगह पर वी डोंट हैव द सेम व्यू पॉइंट्स. Though we are in a family, though we are having the same, they have been born and brought up in the same atmosphere, but in the society also, not everyone is going to be my friend. That doesn't mean everyone is going to be my enemy. Friend नहीं है तो enemy नहीं है, लेकिन definitely there is difference of opinions. किसी को blue पसंद है तो किसी को black पसंद है. It when there is hate campaign, तो मैंने आपको बताया कि देयर वाज वन, ऐसा कुछ चला भी था हमारे यहाँ, which endangers the freedom of others and actions that cause serious harm can be punished, but we must ensure the restrictions imposed do not suffocate freedom. मतलब दूसरे को समझाना पड़ता है बच्चा. जैसे मान लो कि if a person has taken a wrong step spreading hatred, होता है कम्युनिटी में आप रह रहे हो तो जेंडर में आप अलग हो, आपकी कम्युनिटी रिलीजन में आप अलग हो, आप कास्ट में अलग हो. इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर. तो देयर डेफिनेटली अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, स्प्रेडिंग फॉल्स मैसेज अबाउट एनी कम्युनिटी, एनी कास्ट, एनीथिंग, देन रेस्ट्रिक्शंस हैव टू बी इम्पोज्ड. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना सफोकेट कर दो कि वो खुद मर जाए. मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है द मेजर्स टेकन शुड बी अंडरस्टूड बाय द पर्सन. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज द पर्सन विल बिकम रिबल. अगर आपने उस पर बहुत जोर जबरदस्ती की, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तो वो रिबल हो जाएगा. We need to make him understand that your speech, your campaign is spreading hatred. The Indian Constitution debates the term reasonable restrictions. If the restrictions are excessive or put out of proportion to the action that is being restricted, that will infringe on society overall freedom. We must not become accustomed to imposing restrictions as this is harmful to freedom. मतलब there have been many, कईयों का कहना है कि this freedom जो है ये wrong है, किसी का मानना है कि ये freedom अभी हमारा कम है. तो there is no what you say consensus कि भाई किस चीज को आप right freedom बोलते हो. बस उन सबका मानना क्या है कि इतना रेस्ट्रिक्शंस ही होना चाहिए कि लोग अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे. उससे ज्यादा यू शुड नॉट इम्पोज. नाउ देयर इज, ये है आपका अगेन द कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी. ये सारा आपका जो है दे आर ऑल फ्रॉम व्हाट यू कॉल एज एनसीईआरटीज, सॉरी सीबीएसई न्यू. नाउ एज आई सेड, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डन इट इन द ऊपर करा था. नेगेटिव मीन्स वेयर one seeks to define and defend an area in which individual would be inviolable, in which he or she could do or become whatever he or she wish to or want to or become. And positive freedom है जहां पे हम कहते हैं explaining the idea of freedom to. यहां पर freedom from है, यहां पर freedom to है. A simple word preposition from और to जो है पूरे मीनिंग को चेंज करता है. मतलब द पर्सन इज फ्री, मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट. वेयरएज पॉजिटिव है आपको इस चीज की फ्रीडम है कि आप ये कर सकते हो.
नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? फ्रीडम फ्रॉम, मतलब कि देयर इज नो एक्सटर्नल अथॉरिटी एंड द पर्सन वांट्स, जैसा वो चाहता है वो वैसा करेगा, जैसा वो बनना चाहता है वो वैसा बनेगा। वेयर फ्रीडम टू का मतलब है आपको इतनी आजादी है कि आप इस चीज को कर सकते, you have the freedom to develop your potential according to the prevailing political social conditions. This is an area which where no external authority can interfere. It is a minimum area that is sacred in which whatever the individual does not interfere. Negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which an individual can express himself or herself. आजकल ये negative liberty काफी चल रही है, बहुत चल रही है। मतलब people say that we should not be restricted. Give us complete freedom. Whereas positive liberty says freedom too. यानी कि एक ऐसा कंडीशन concerned with improving the conditions and nature of individual society relationship, जहां इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो रही है। Positive liberty recognizes freedom is only possible within society and strives to create a society that fosters individual growth. वहां जो नेगेटिव लिबर्टी है ना, वो सिर्फ इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है, एंड पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो पूरे सोसाइटी को, मतलब वो कहती है कि सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जहां पर पीपल आर द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। नेगेटिव लिबर्टी इज ओनली मतलब कि एम्फसाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, मैं जो चाहता हूं वो मैं करना चाहता हूं। Contrary to this, negative liberty is concerned with inviolable zone of interference, not with the conditions in society. In general, they support each other, but tyrants may use positive liberty arguments to justify their rule. मतलब उनका कहना है कि कई बार जो tyrants हैं, यानी कि the people who misuse the powers, the dictators, they may use positive liberty कि हम तो सोसाइटी को बनाने के लिए मतलब कि आपको ये restrictions डाल रहे हैं। The next, what this is the one बच्चा which I said कि new content from CBSE, I've already used it, मतलब मैंने सबसे last में डाल दिया है। The last but not the least is freedom of expression, and ये वाला, this particular question is again a very important from this particular chapter. मतलब इसमें से एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का आ जाता है आपको, then of course you can also expect difference between liberty and freedom, and पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि what are the questions which, एक तो मिल्क का harm principle has always come in the exam. These 3-4 questions are the one which you can expect from this particular chapter. Now what is freedom of expression? ड्राइंग बनाकर आप एक्सप्रेस करते हो। if you remember the chapter making of a global world, in 10th standard in social science, there were many people and there were many movements, like एक था आपका फ्यूजन म्यूजिक, चटनी म्यूजिक, then the creation of the allegories like Germania, Marianne, Bharat Mata. What were they? They were expressions. मतलब expressions does not mean कि it should be artistic. Expression means when you are able to express, that can be written, oral, artistic, music. Freedom of expression is a fundamental value, and for the society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it.
इट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि आपका ये जो है इट कम्स अंडर व्हाट यू कॉल एज नेगेटिव लिबर्टी. इट कम्स अंडर व्हाट यू कॉल एज नेगेटिव लिबर्टी, यानी कि इंसान को इतनी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. द बुक Ramayana retold by Abre Menon and satiric verses by Salman Rushdie was banned after protest from some sections of society. अभी आदि पुरुष का सेम हुआ. एंड मतलब मैं यहाँ पर आदि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ आदि पुरुष बिकॉज आई कुडंट इवन वॉच द फर्स्ट 10 minutes बिकॉज बीइंग हम लोग रामायण ही पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो लुकिंग सीता इन दिस काइंड ऑफ यू नो थिंग वी हैव नेवर सीन. हम सीता को एक माँ के रूप में देखा है, एंड तू तड़ाका करके तो हमने कभी भी सोचा नहीं है. Therefore, even I couldn't watch 10 minutes. When it came on Netflix or something, so I've just gotten it down. 10 minutes we watched and said, no, not at all. But that is freedom of expression. वहां पर जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इट इज आर एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन है कि हम हनुमान जी को कैसा दिखाना चाहते हैं. भाई लोगों ने क्वेश्चन पूछा राम की मूछें कब से आ गई, एंड द डायरेक्टर सेड भाई ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको आप मना नहीं कर सकते हो. हमने हमारा एक्सप्रेशन है कि राम की मूछें थी. दैट इज वेयर दिस ये वाला जो लिखा हुआ ना बच्चा, द बुक रामायणा रीटोल्ड बाय, ये इसी चीज को करता है कि जो अब्रे मेनन ने जो मतलब की लिखा था जिसमें सलमान रश्दी ने काफी सैटारिक वर्सेस पे थे, दैट वाज बैंड. Even you might have seen there are certain movies जब वो आता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट करता है. देर आर सर्टेन मूवीज ऑफ, अभी ये जो OMG आया था, अभी जो आया था आई हैवंट वॉच्ड इट, बट उसके अंदर मतलब कि इट वाज सेड दैट द मतलब पहले बिफोर इवन 15 days बिफोर द रिलीज द सेंसर हैड पुट द रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि लोगों ने कहा अक्षय कुमार शुड नॉट पोर्ट्रे द रोल ऑफ लॉर्ड शिवा. वो इसलिए नहीं कि वो अक्षय कुमार को लॉर्ड शिवा नहीं देखना चाहते, मतलब कि उनका मानना था कि लॉर्ड शिवा ऐसे जूते पहन के ऐसे नहीं करते. तो सेंसर ने वहां पर तो नाउ वही आर्ग्यूमेंट आया, भाई हम तो एक्सप्रेशन है. देन सेंसर ने उसको चेंज किया एंड दे सेड instead of Lord Shiva, show him the messenger of Lord Shiva. This is where आपका freedom of expression comes. According to the makers, it was freedom of expression. वो कैसे दिखाना चाहते हैं, मॉडर्न शिप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन according then it was, तो certain times you might be banning is an easy solution for the short term. मतलब short term में तो it is okay because it meets the immediate demand. लेकिन अगर long term project है तो long term project मतलब if it is something related to politics, then भाई मूवी तो आएगी जाएगी, तो बैन कर दिया, हो गया, खत्म हो गया. But something which may be on a long term, because once one begins to ban, then one develops a habit of banning. मतलब अगर हर बात के लिए दूसरा जो है वो अपने मतलब कि द पर्सन प्रोटेस्ट और हर बात के लिए बैन होगा, तो धीरे धीरे चीजें सब कुछ बैन ही तो होंगी. Constraint of different kinds thus exist and we are subject to them in different situation. मतलब ये जो constraints है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे वो अलग अलग है और हमें उसे अलग अलग सिचुएशन में ही हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लाइक मूवी को बैन करना इजी है, बट दिस कैन नॉट, ये जो बैन है ना, यू कैन नॉट पुट ऑन एनी व्हाट यू कॉल एज कम्युनिटी. इफ वी विलिंग or for the sake of pursuing our goals or ambition accept certain restrictions, of freedom is not limited. जैसे मैंने कहा कि घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपने
स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, डोंट वी फॉलो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस? डोंट वी वियर यूनिफॉर्म्स? डोंट द टीचर्स वियर साड़ीज? तो क्या हमारा फ्रीडम कर्टेल हुआ? नो no. अपने एम्बिशन के लिए जब आप पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डू सर्टेन थिंग्स, उसके लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर. दैट डजंट मीन योर फ्रीडम हैज बीन टेकन. दैट मीन्स यू हैव बीन गिवन द फ्रीडम विथ सम रेस्ट्रिक्शंस. आपको फ्रीडम बिल्कुल दिया गया है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ. While reflecting on such situations, we need to realize when constraints are backed by organized social, religious, or cultural authority, or might be the state, they restrict our freedom that are difficult to fight against. मतलब वो कहते हैं सिचुएशन में कभी कभी हमें ये भी समझना पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट ने, किसी अथॉरिटी ने, किसी सोशो रिलीजियस ने ये डाल दिया हो ना, फिर आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, बिकॉज एक्चुअली दे आर एक्सेप्टेड बाय ऑल. इन केरला, एज यू नो, देयर इज वन, मतलब ये मैंने आपको पहले भी करवाया है. इन केरला देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन विमेन टू एंटर इनटू द टेम्पल. नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. फ्रीडम, हमारा जो इक्वालिटी है वो कहता है कि एवरीवन इज इक्वल एंड नो वन शुड बी बार्ड टू एंटर इनटू एनी प्रेमिसेस. लेकिन सोशियो, जहां हमारा इकोनॉमिक आ जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस ग्रुप्स को भी इज्जत करता है, वहां पर आप देखो अभी तक इट हैज नॉट बीन सॉल्व. द रीजन इज, एक तरफ लॉ है, दूसरी तरफ आपके इकोनॉमिक, सॉरी, आपके रिलीजियस ग्रुप्स हैं, एंड पीपल दे ऑलवेज रेस्पेक्ट. तो कई बार अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हो जाए ना, तो वी आर नॉट एबल. बट अगर द रेस्ट्रिक्शंस आर ओनली फॉर अवर बेटरमेंट, if they are only to pursue our ambitions, like आपके घर के अंदर या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, there might be certain restrictions. That is only because you are able to concentrate. अगर हम अपने ओल्ड थियोरीज को भी ले लेना, जहां हम, मतलब कि हमें बोला गया था, अगर हम उसके पीछे की भी वजह को देखें, तो that tells us that these restrictions were put because they wanted us to do better. That was not, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है. That is because they want us to become a better human. So that is where freedom of expression comes, and freedom of expression in our country has always been a controversy. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. इफ आई स्टार्ट टेकिंग, यू विल से कि मैम कितने एग्जाम्पल्स हैं. बहुत सारे हैं. एक बार एम.एफ. हुसैन जी ने ऐसा ही कर दिया था. ही हैड मेड एन, मतलब की आर्टिस्टिक पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग, मतलब दैट शोड सीता माता एंड हनुमान जी इन अ रॉन्ग पोर्ट्रेल. देन देयर वाज बैन. उनको, इनफैक्ट ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू इंडिया. पेंटर कहता है आई एम, मतलब कि दिस इज माय एक्सप्रेशन. अब आप उसको कैसे ले रहे हो, बट it has to be within the limits. Society doesn't comprise of 4 people. Society comprises of everyone who is surrounded by us, who is affected due to our actions. अब ये आपका जो है, मतलब 4 reasons were given by Mill for protecting freedom of speech and expression. This is one of the what you can say, short question you can expect in your exam. First, no idea is completely false. What appears as false has some element of truth. ये हिंदी में भी बोलते हैं ना, कोई उसका नाम क्या, बिना आग के कहीं से धुआं नहीं आएगा. वही, मतलब even if someone is expressing something, there might be some reason behind that. Truth
does not emerge by itself. It is only through debates and discussion that truth emerges. तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? आपको बोलना पड़ेगा, आपको डिबेट करना पड़ेगा, एंड सच को हम अगर सामने लाना चाहते हैं तो इट इज, दैट इज व्हाई व्हेन यू सी द कोर्ट, कोर्ट के अंदर एक दिन में क्यों नहीं हो जाता है? हम तो कहते हैं भाई ये तो हो गया तो है, सामने के सामने है, लेकिन व्हाई डज कोर्ट गो थ्रू सच अ लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन? बिकॉज दे वांट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, एग्जैक्ट ट्रुथ. Yes, murder is a murder, लेकिन sometimes a murder might have been circumstantial. The murder might have been defending ourselves. तब कोर्ट जो है कंटेम्प्ट नहीं करता, उस वक्त में वो क्या करता है? सजा तो देता है, लेकिन उतनी नहीं जितने की एक हीनस मर्डर का. तो दिस इज वेयर डिबेट की जरूरत पड़ती है. तो वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी बात को एक्सप्रेस करना जरूरी है. The conflict of ideas is important not only for the past but for the present and future also. And it is only when the truth is exposed to constant criticism. If truth is there, it becomes trustworthy. It is always there. मतलब conflict पुराना नहीं, present नहीं, future हमेशा होगा. लेकिन अगर truth is exposed to constant criticism, truth then becomes trustworthy. अगर लोग मतलब this is हम बोलते हैं ना, अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है तो that means there is something reality. लोग आपके पीछे तभी बोलेंगे when you have. I remember I had my मतलब की एक इंचार्ज थी, and she used to tell me, मतलब she was very close to me, she was very friendly to me, मतलब she was friendly, she was hostile सबको साथ. तो वो कहती थी भाई बदनाम भी वही इंसान होता है जिसको कोई नाम हो. We cannot be sure that what we consider true is actually true. Ideas which were true at one point are false at another point. ये तो है ना भाई. उस जमाने में ऐसा होता था, ग्रीस में ऐसा होता था, एथेंस में ऐसा होता था. But can we use those techniques, those facts now? Because they are not facts. Some of them might be only ideas. हो सकता है कि उस वक्त में दे वर फैक्चुअल, लेकिन आज इट माइट नॉट बी. तो अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने आप को बात नहीं करेंगे, अपनी बात को सामने नहीं रखेंगे, तो हाउ वी विल बी ग्रोइंग? भाई इफ आई टॉक समथिंग अबाउट माय, मतलब कि व्हेन आई वाज 19 इयर्स और आज के 19 इयर्स में मैं मतलब कि इवन आई फील सर्टेन टाइम्स when I look at my daughters, I say कि भाई तुम्हारी जैसी मैं थी, बट तुम्हारी उम्र में तुम्हें 2 बच्चे हो गए थे, तो मतलब मैं बड़ी. तो कई बार इवन आई टेल माय डॉटर्स, मैं क्या मतलब मैं क्या पैदाइशी बड़ी हुई थी? एंड शी वुड लाफ एंड शी वुड से यस ममा, बिकॉज यू वर मतलब कि यू हैव बीन entrusted with responsibility. उन दिनों में that was right, but आज वो ठीक नहीं है. Today we need to discuss. Today we need to. पहले जमाने में there were so many things. If a woman was subject to domestic violence, she was not supposed to speak. But these facts were, मतलब कि उन दिनों में it was okay. Now it may not be. So over the period things change, and we need to give freedom of expression, freedom of speech. अपनी बात को बताना, अपनी बात को जताना. स्पीच हो जाता बच्चा बताना, और एक्सप्रेशन हो जाता जताना. Now the last but not the least is आपका, which I said कि this is the content from CBSE, and this is the one which मतलब की है difference between the two concepts. Liberty versus freedom. As I said, the name of the chapter has been now changed from freedom to liberty. Normally लोग freedom and liberty को synonymous use करते. Liberty comes from the Latin word libertatem, yani which means condition of a free man.
while freedom comes from English word freedom, यानी कि state of free will, अपनी मर्जी. मतलब लिबर्टी होता है एक कंडीशन जहां हम फ्री हैं, एंड फ्रीडम होता है हमारी मर्जी. लिबर्टी is power to act and express oneself according to one's will, whereas freedom is the power to decide one's action with what is wrong and what is right. हमें मतलब कि लिबर्टी होता हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं. आई हैव द लिबर्टी टू गो आउट, आई हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड फ्रीडम इज what is right and what is wrong. Freedom is more concrete. ये पूरा आपका डिफरेंस है. Then liberty, which is more associated with an individual's connection with the state rather than other individuals and circumstances. Freedom हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि that is for everyone. क्या right है, क्या wrong है. And liberty is individual. भाई अब आप अगर if you want to become a politician, if you want to become a doctor, if you want to become, that is your liberty. That is the condition where you would be given all the condition कि आप अपने आप को express कर सकते. Whereas freedom would be curtailing certain actions because that is आपका relation with everyone. Liberty, condition of free man, power to act, free to do something, and freedom is state of free will, power to decide, free from something. The common feature between these two concepts is both remain unconstrained, which means that their realization is free from any constraint. Further, both follow rightful or ethical conformity in terms of their realization, which I have been telling you कि कुछ हमारे moral, कुछ हमारे ethical words हैं, actions हैं, जो इन दोनों पर है. लिबर्टी मेनली है हमारे लिए. I have the power to act, I have the power to do something. I want to become a doctor, I can do it. And freedom is I am free from the evils. So this is what liberty versus freedom is. क्योंकि ये जो word है ना बच्चा, this is often confused. क्योंकि हम synonym में use करते हैं. If you look into the dictionary, freedom and liberty has the same meaning. So liberty is liber and freedom is freedom. ये जितने points हैं, that is starting from here, 1, 2, 3, ये सारे आपके जो है important है. And this is also very important because this is a new concept and new content from CBSE. और past के 2-3 सालों में I have seen, because this is 3 years back it was added. It is not added in the chapter, but it is there on the websites. You must have seen it. So questions from this particular content always comes. उसको तो इस chapter से what you can understand is Mahatma Gandhi's outlook, J.S. Mill's harm principle, then positive and negative liberty और the dimensions of freedom जिसको हम कहते हैं positive and negative दोनों same ही है. उसके बाद आपका जो है what you understand by the J.S. Mill ने जो reasons दिए हैं for having freedom of speech and expression वो, and what is the difference between liberty versus freedom. These are the important questions which you can expect in your exams from this particular chapter. So with this, the chapter liberty is complete.